Hi friends, I Sunil Gupta welcome you at the platform of Edukemy, the platform that has to provide online education to all aspirants who are making preparation for civil services. Friends, in the series of my academic discussion, I am going to make the discussion about very important topic, and this is called the criminalization of politics. Perhaps you have known about criminalization of politics. बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, न्यूज़पेपर्स में भी ये आते रहते हैं, बट वेरी फ्यू पर्सन इज गोइंग टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स. ये टॉपिक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के चैप्टर नंबर 13 पेपर 2 से रिलेटेड है, and this is also related to the governance topic in the polity and governance of the general studies paper 2. तो और इसके बारे में जानते हैं something about criminalization of the politics. ये है क्या, how the discussion will be there. एक छोटा सा डिस्कशन है, इसको पूरी तरह से वीडियो को देखोगे, एंड इफ यू फील एनी काइंड ऑफ द प्रॉब्लम देन यू हैव टू राइट मी. आई विल जस्ट क्लियर ऑल द डाउट फ्रॉम माय साइड. ओके, तो देखो बच्चे, हम लोग कैसे प्रिपरेशन करेंगे, कैसे इसको डिस्कशन करेंगे. फर्स्ट इंपॉर्टेंट, वी विल हैव टू मेक द डिस्कशन अबाउट द इंट्रोडक्शन टू द क्रिमिनलाइजेशन ऑफ द पॉलिटिक्स. इंट्रोडक्शन पहले लेंगे कि व्हाट इज द क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स. Criminalization of politics itself is not, you can say the concept of the positivity. It is a negative concept. ये negative part of the governance है. तो हम लोग देखेंगे what is the implication has to come for the, this criminalization of the politics. अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि criminalization of politics is going to happen in our social system. Then what is the reasons behind it? यार इसके पीछे reasons क्या, political reasons है, social reasons है, what is reasons behind it? एक छोटा सा briefing लेंगे what are the reasons. And you know very well this is the negative part of our governance. Then what should be done, in order to eliminate criminalization of politics from our system. The politics का जो criminalization हो रहा है, इनको हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा. तो many reforms and initiatives have been taken by the government, by the parliament, by Supreme Court, by the High Court. तो many things we have taken here. एक छोटा सा क्रोनोलॉजिकली फॉर्म में इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट. तो बेस्ड अपॉन दिस वी विल हैव टू फिनिश द डिस्कशन अपॉन द क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स. लेट अस कम फॉर द डिस्कशन अंडर द इंट्रोडक्शन पोर्शन. देखो, समझाने के लिए एक मैप बनाया हुआ है, इसको समझोगे. So this is the population of our country, and this population is managed through the law. Law के थ्रू ये मैनेज करते हैं, and this law is made by our legislature. This law is there, and law is going to be followed by all the person in order to maintain the social order, right? So okay, this law, अगर ये सब कुछ मैनेज किया सब लोगों ने तो ठीक है, but certain portion of the population are not going to manage the law, not going to obey the law. तो इसको हम लोग बोलते हैं कि एक ऐसे एरिया है जो लॉ को वायलेट करते हैं, वायलेटर ऑफ लॉ. तो ऐसे में क्या करता है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन हैज टू ट्रैप दिस पर्टिकुलर पॉपुलेशन एंड हैज टू सेंड टू द जुडिशियरी. जुडिशियरी हैज टू मेक द फेयर जस्टिस. वहां पर फेयर जस्टिस है with right to defense from the both the sides, and then and thereafter they have been kept under the rehabilitation center, what is called the jail. जेल एक रिहेबिलिटेशन सेंटर, वहां पर इसको रखते हैं. एंड आफ्टर गेटिंग द एरिया रिफॉर्म करने के बाद इनको मेन स्ट्रीम में फिर यहाँ पर कंटिन्यू कर देते हैं. फॉर लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन इज गोइंग टू हैपन इन सच ए वे, राइट. टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द वर्क ऑफ द पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, कि ट्रैपिंग द एरिया ऑफ द क्रिमिनलाइजेशन. इनका काम क्या है, फेयर जस्टिस देना. और अगर ये रियली वायलेटर है, देन इनका काम है इनको रिहेबिलिटेट करना एंड हैज टू सेंड बैक टू द मेन स्ट्रीम ऑफ द पॉपुलेशन. ये एक छोटा सा एरिया है लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन, ऐसे ही चलता है. दिस इज नेचुरल फिनोमिनन, राइट. इंडिया की बात करें ना, तो ये जिम्मेवारी लेता कौन है, एट द स्टेट लेवल दिस इज कॉल्ड द डायरेक्टरेट ऑफ पुलिस हैज टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसमें बीट ऑफिसर, एसएचओ, डिप्टी एसपी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, डीआईजी, एंड अपेक्स लेवल पे द डीजीपी, दैट इज कॉल्ड डायरेक्टरेट ऑफ पुलिस हैज टू टेक the responsibility for the police administration. And union level pe there is the Ministry of Home Affairs. Under this, Department of Internal Security has to cooperate and coordinate all the mechanisms of the law and order administration. बेटा यही हमारा एक छोटा सा मैप है. अब देखते हैं criminalization of politics is going to happen. Whenever this element जो हम लोग कह रहे हैं ना कि जो criminal element है, whenever has to get enter into the political process, यानी political party को ज्वाइन कर लेते हैं,
एग्जीक्यूटिव मीटिंग्स में आ जाते हैं, एंड देन दिस पॉलिटिकल पार्टी, इसके बाद ये इलेक्शन लड़के पहुंच जाते हैं लेजिस्लेचर में, दिस क्रिमिनल इज गेटिंग द पोजीशन इन द लेजिस्लेचर, एंड देन इन देयर आफ्टर ये आदमी पहुंच जाता है कैबिनेट में एंड बन जाता है कैबिनेट मिनिस्टर, एंड कैबिनेट मिनिस्टर हैज टू जस्ट कमांड ओवर द ब्यूरोक्रेसी इंक्लूडिंग द पुलिस ब्यूरोक्रेसी। अभी करते क्या है कि दिस क्रिमिनल हैज टू, the boss of this bureaucracy then has to just disturb the goal of the bureaucracy, and then and thereafter whole the problem is going to exist. This phenomenon means criminal का politics में जाना और democratic system में पूरी तरह से होड़ पकड़ लेना is called the criminalization of politics. Involvement of criminal elements in the political process is simply is known as the criminalization of the politics, right? This going to be happen. अब यहाँ पर आते हैं, first important reference of criminalization of politics came into being in India by जयप्रकाश कमेटी 1974। पहले हमें पता नहीं था, जयप्रकाश कमेटी 1974 में इन्होंने एक रिकमेंडेशन दिया, उस रिकमेंडेशन में एक इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन था क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। अब आ चुका है, यू हैव टू टेक द एक्शन टू एलिमिनेट इट, राइट? Later important, the 15th Law Commission 1997 has also made the recommendation that we have to save the democracy by eliminating criminalization of politics. उसके बाद नेशनल पुलिस कमीशन, गोस्वामी कमिटी, श्री कृष्णा कमीशन, ये सब कमीशन का रिपोर्ट को भी अगर तुम देखोगे, then there is reference of the criminalization of politics, right? But very important, recommendation was made by the N. Bohra Committee 1993. N. Bohra Committee जिसको हमने क्रिएट किया था कि हैव टू फाइंड आउट द सिंडिकेट और द नेक्सस अमंग पॉलिटिशियन, बिजनेस एलाइट्स, ब्यूरोक्रेट्स एंड द क्रिमिनल्स, कि ये सिंडिकेट्स हैं जो स्टेट पे प्रेशर डाल करके अपना काम कराते हैं। देन यू हैव टू फाइंड आउट कि इसमें कौन कौन सा सिंडिकेट है, कैसे इन्फ्लुएंस करता है। बट इन बोहरा कमेटी जब इन्होंने देखा, इनको एनालाइज किया, देन इनको लगा कि दिस क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स इज सेड टू बी द वेरी इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ द गवर्नेंस केम इनटू बीइंग, इसको हटाना बहुत जरूरी है। तो आफ्टर द रिपोर्ट ऑफ द एन बोहरा कमेटी, गवर्नमेंट टुक मेनी एक्शंस, बहुत सारे एक्शंस हम लोगों ने लिया है। क्वेश्चन इज कि दिस इज द, एक रिपोर्ट भी देख लो तुम लोग, अभी का रिपोर्ट है, दैट इज द कमिंग फ्रॉम द एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, एडीआर का रिफॉर्म है, जिसमें 46% ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इज कमिंग फ्रॉम द क्रिमिनल रिकॉर्ड्स, राइट? एंड करेंटली लोकसभा एमपीज की अगर हम बात करें, 29% पॉपुलेशन ऐसे हैं हैविंग द सीरियस चार्जेस, इंक्लूडिंग द रेप, मर्डर, किडनैपिंग, इस तरह के चार्जेस जिनके ऊपर में लगे हुए हैं, राइट? तो 29% अब तक का हाईएस्ट रिकॉर्ड है सीरियस क्राइम का in the Lok Sabha. So very important fact, this is a very serious problem in our Indian democratic system, right? Question is, कि what is the implication of criminalization of politics? So this is the very important, this is negative implications. होता क्या है बच्चे ना, सबसे पहले criminalization of politics is going to happen, इस मैप को समझोगे, right? तो आफ्टर क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, क्रिमिनल एलिमेंट चला गया लेजिस्लेचर में, लेजिस्लेचर के बाद चला गया, वो बन जाता है मिनिस्टर, मंत्री बन गया वो। देन एंड देयर आफ्टर ही हैज टू हेड द ब्यूरोक्रेसी एंड हैज टू पॉलिटिसाइज द ब्यूरोक्रेसी टू ट्रांसफर परफॉर्मेंस अप्रेजल, उसी अनुसार किया जैसे कि क्रिमिनल को सेव कर सके, राइट? तो ये बन गया politicization of bureaucracy. Bureaucracy immediately has to change the goal. पहले गोल क्या था पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का? एलिमिनेशन ऑफ क्राइम। अब गोल बन गया क्या? प्रोटेक्शन ऑफ क्राइम, बिकॉज हु इज द बॉस? बॉस इज द क्रिमिनल, right? So then at that particular time, the goal displacement is going to happen. Then होता क्या है कि criminal is motivated to join politics. अब ज्वाइन करने के लिए क्रिमिनल भी चाह रहे हैं, एंड देन एंड देयर आफ्टर दिस पर्टिकुलर पॉलिटिक्स हैज टू कम इन द क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, एंड देन इट हैज बिकम द साइक्लिक फिनोमेनन। अब ये बन जाता है बिल्कुल साइक्लिक फिनोमेनन, एंड व्हेनेवर एनी फिनोमेनन हैज बिकम द साइक्लिक फिनोमेनन, इट इज वेरी डेंजरस फॉर द एनी सिस्टम। वायरस डेंजरस क्यों है? बिकॉज रिप्लिकेट करता है, ये साइक्लिक बन जाता है, लूप में चला जाता है सिस्टम, राइट? कंप्यूटर वायरस लूप में चला जाता है कोई भी प्रोग्राम, then it has become a part of the very hampered process, right? Same thing, threatening is going to happen under the criminalization of politics, right? Now second important, it has to meet the corruption also. देखो जब criminalization आ गया, then criminal, अगर तुम्हें आगे बढ़ना है, then bureaucracy has to come under the corruption, nepotism, favoritism. It is not good for the parliamentary democracy or to murder the parliamentary democracy, because parliamentary democracy is going to work upon the issue, यहाँ पर the work upon the criminalization is going to be happen here.
and ultimately it has to create the national threat, national security threat create कर जाता है, because criminal element has to make the nexus with the global terrorism, और फिर ये nexus has to create the national security threat. Very important fact here. और सबसे बड़ी बात जब तुम जाओगे सोशल सिस्टम में, then this particular criminal culture is going to dominate upon the social system. Criminal value dominates upon the achievement value. यहाँ पर जो भी हमारे सोशलाइजेशन का पैटर्न है उसमें हम अचीवमेंट वैल्यू पे फोकस नहीं करते हैं, धीरे धीरे वी हैव टू फोकस अपॉन द क्रिमिनल वैल्यूज. एंड अगर क्रिमिनल वैल्यू हैज बिकम ए पार्ट ऑफ सोशलाइजेशन, इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू एलिमिनेट इट फ्रॉम द सोशल सिस्टम. जैसे हम करप्शन को हटा नहीं पा रहे हैं बिकॉज इट हैज बिकम ए पार्ट ऑफ सोशलाइजेशन, वी एक्सेप्टेड सोशलाइजेशन, सेम ऑटोमेटिकली दैट्स गोइंग टू बी हैपन इन द क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स. तो बच्चे इसको हटाना बहुत जरूरी है, राइट? अब इसको हटाएंगे कैसे? सो दीज आर द फैक्ट. अब हम देखते हैं व्हाट इज द रीजन बिहाइंड कि अभी तक कंटिन्यू कर रहा है. तो second ARC has made the analysis upon the reason behind criminalization of politics, and then we have found out here there is lack of political will is the first important reason. Is there what? Lack of political will. Politicians are not eager to eliminate criminalization of politics. कुछ नहीं करना था, एक एक्ट बना हुआ है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, उसमें अगर हम मॉडिफाई कर देते हैं देन क्रिमिनल इमीडिएटली हैज टू बी स्टॉप्ड in order to get enter into parliament or the state legislature, but we didn't do, right? And then in there after this is the lack of political will, an important reason. Second important is said to be what is called use of muscles and what is called the money power. Muscles and the money power is going to be happen here, and this is the second important the region here, because politician को election लड़ना है, बड़े बड़े रैली करना, there is need of the money. White money? No, black money. The black money कहाँ से लाओगे? That is only coming from the criminal element. A criminal element is there, then you have to take support of the criminalization, right? Narrow self-interest is also going to be happen here. So many community and also the candidate has the narrow self-interest that is leading toward the criminalization. कभी-कभी तो ऐसा होता है ना, lack of choice ही नहीं है. टोटल जितने कैंडिडेट्स हैं वो सब क्रिमिनल है, तो भाई अब उसी में से सिलेक्ट करना है. Nota is there. The nota has the much more relevance in matters of the election or the democracy. So based upon this particular fact, perhaps the real reason behind inculcation of which one, that is called the criminalization of politics. Very great. अब रीजन तो समझ गए तुम लोग, अब बताओ कि क्या करना चाहिए. So we have taken initiative to eliminate criminalization of politics, right? And इसके लिए we did many things. First important, we accepted N Bohra committee recommendation. The N Bohra committee recommendation ये था कि you have to work upon 4 important areas. The first important area is there, so very important, you have to make accountability in the section 8 of Representation of People Act 1951. Section 8 में क्या था ना, इसमें लिखा हुआ था कि first, if any person is convicted, convicted हो गया and sentenced, by the lower court for 2 years or more in matters of criminal offense, that particular person shall not contest the election for union legislature plus state legislature. तो कभी अगर लोअर कोर्ट ने बोल दिया उनको कि आप क्रिमिनल ऑफेंस में 2 साल या उससे ज्यादा का सेंटेंस्ड हो गया उसको, ये आदमी वैसा इलेक्शन नहीं लड़ सकता है. दिस इज मेंशन इन सेक्शन 8, बट मेनी लूपहोल्स आर गोइंग टू हैपन इन द सिस्टम. तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट, पहले कन्विक्शन एंड सेंटेंस दोनों होना चाहिए. एंड वन इंपॉर्टेंट पार्ट इज देयर आल्सो दैट व्हेनेवर दिस पर्सन इज गोइंग टू, जैसे कि आज इनको लोअर कोर्ट ने बोल दिया कि साहब आपको 3 साल की सजा है, तो इलेक्शन नहीं लड़ सकता. बट 90 डेज के अंदर में इफ द पर्सन हैज टू गो टू द हाई कोर्ट for the review or for the its own further defense, then for the time being बीच में ये इलेक्शन लड़ सकता है. तो ये सब लोग पूछते हैं. Many criminals have to come from this particular point. So there was also the area is there. So based upon that only it has to say first important, you have to just so block all the loopholes under this one or to this one. पहले तो इनको हटाइए. Second important is said to be ethics is required in the legislature. Moral based politics should be taken under the consideration. Third important, civil society movement should be promoted.
बिकॉज स्टेट में पूरी तरह से सिविल criminalization अगर हो चुका, then non-state authority should be there that has to make the awareness among the community about criminalization of the politics. And very very important fact, independence of police machinery. Police machinery must be make the independence so that there would not be goal displacement of the police administration. The goal displacement जो हो रहा है ना, वो कम से कम नहीं हो. Police has to take the proper goal, proper criminal को eliminate कर सके. So proper independence is required for the police administration. So 4 important areas suggested. Still we are going to work upon these particular 4 important areas. Very important one committee is called the Indrajit Gupta committee. Indrajit Gupta committee was the committee that has to make the very great recommendation, state funding of election. आखिर political party has to make the collaboration with the criminals. Why? Because of the black money, because of the election expenditure. Election expenditure भाई साहब इतने ज्यादा हैं. So for this particular purpose, we have to take the help from the criminals. If a state has to sponsor the election, so there is no need of the political party to take the support of the criminal element, and criminalization of politics will go vanished. तो इनका बहुत बड़ा recommendation. Still we are going to consider upon this particular matter. Judgment of Madras High Court, very important. In the Jayalalitha case, there was Madras High Court judgment, and this judgment was there कि section 8 में जो लिखा हुआ है ना, conviction and sentenced. तो conviction हो गया, sentence नहीं हुआ, तो बीच में आप election लड़ सकते हैं. But it has to say no, you cannot contest election because these are inseparable twins. एक बार conviction हो गया, then supposed to be sentenced also, that is mentioned under the section 8 of Representation of People Act. तो इन्होंने एक loopholes था जो section 8 का, that closed by the Madras High Court judgment. Election Commission has taken also the reforms here, has made the recommendation to Government of India कि सर आज के बाद से ऐसा होना चाहिए कि the candidates background must be made transparent before electorate, ताकि उनको पता हो कि जिस उम्मीदवार को हम चुन रहे हैं वो कैसा है. So based upon that, there should be the educational background, criminal background, personal asset value and expenditure in election must be made transparent through the local newspaper and the other important channel. Right, should be there. Now next important, second ARC. Second ARC also made the recommendation कि ethics is very important here, and ethics के लिए Office of Ethics Commissioner must be promoted and ethics committee must be promoted here. Right, the committee made very very important recommendation also, state funding of election, that was earlier made by the कौन सा कमिटी था, इंद्रजीत गुप्ता कमिटी. तो सेम चीज इन्होंने भी एक बार रिपीट किया. स्टिल वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड हियर. Very very important case came into being, Lily Thomas case, in the Supreme Court. And Supreme Court has made very historical judgment in this way, that section 8(4), this particular, इनके लिए बोला कि मैं इनको डिक्लेयर करता हूं अनकॉन्स्टिट्यूशनल. मीन्स एक बार लोअर कोर्ट ने जो बोल दिया, देन यू हैव टू गो टू द हाई कोर्ट विद इन 90 days. इन बिटवीन यू हैव टू फाइट द इलेक्शन, यू हैव टू कंटेस्ट द इलेक्शन. अब नहीं कर सकते बिकॉज दिस क्लॉज इज डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड अंडर द लिली थॉमस केस. एंड सो एक बार अगर लोअर कोर्ट ने कन्विक्ट कर दिया, देन द पर्सन इज नॉट गोइंग टू क्वालिफाई टू कॉन्टेस्ट द इलेक्शन इन लोकसभा, राज्यसभा, legislative assembly and legislative council under the Representation of People Act is there. And एक option के लिए भी इन्होंने बोला, that should be the nota automatic, none of option should be there in the EVM machine, ballot paper, whatever भी जो अभी इंट्रोड्यूस हो चुका. राइट, सो बहुत बड़ा जजमेंट था ये. हिस्टोरिकल वे में हमने इनको ब्लॉक किया. तो बच्चे हमने क्या क्या ब्लॉक किया? सेक्शन 8(1) में कन्विक्शन एंड जो सेंटेंस था दोनों को इंसेपरेबल कर दिया. सेकंड इंपॉर्टेंट हमने कहां पे किया? दैट इज नाउ अगर आप अपील करते हैं, अगेन ऑटोमेटिकली यू कैन नॉट कंटेस्ट द इलेक्शन बिकॉज इट हैज बीन डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड. अब कहां पर क्रिमिनल आ सकता है? फिर भी क्रिमिनल्स आर गोइंग टू हैपन. दिस क्रिमिनल्स आर एलिज्ड क्रिमिनल्स. अभी तक ये एलिगेशन है, लोअर कोर्ट में इनके केसेस पेंडिंग है, नहीं चल रहे. अब वही क्रिमिनल्स. राइट, तो हाउ कैन इट बी टेकल्ड? देन फॉर दिस पर्टिकुलर पर्पस सुप्रीम कोर्ट इन 2017, रिसेंटली की बात कर रहे हैं, 2017 में दिस सुप्रीम कोर्ट हैज टू से हियर कि अपॉइंट स्पेशल कोर्ट. स्पेशल कोर्ट का मतलब फास्ट ट्रैक कोर्ट टाइप का सिस्टम, टू ट्राई दोज पर्टिकुलर पॉलिटिशियन हु आर द पेंडिंग क्रिमिनल केसेस,
तो इनके ने रिकमेंडेशन दिया था. बेस्ड अपॉन दैट सुप्रीम कोर्ट ने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में डायरेक्टेड द government that the political party has to publish online pending criminal cases of their candidate. Second important, Supreme Court has to say rapid criminalization is arrested by the legislature but should begin with criminalizing the political parties here. And very very important fact is there that जो भी heinous crime अगर किया हुआ है इन्होंने इनको यहाँ पे ट्राई करेंगे स्पेशल कोर्ट्स में, राइट. एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस को माना यूनियन कैबिनेट ने. एंड यूनियन कैबिनेट इन 2018 has given the directives and made the Supreme Court the special court we have created in the 12 special courts we have created across the 11 states in order to try all the MPs and the MLAs whose cases are in the pending situations. तो अब देखो ये सब है, दिल्ली में 2 तरह के कोर्ट, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना. दीज आर द पर्टिकुलर स्टेट्स जहां पर ये केसेस को हम ट्राई करते हैं. एंड वी हैव फिनिश्ड द एरिया ऑफ द क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, राइट. तो ये एक ब्रीफ डिस्कशन था क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स पे. So whenever you are watching the video, you have to incorporate this information to the chapter number 13, Law and Order Administration of the paper 2 of Public Administration or the governance area. It's okay. So all the best. Thank you very much to you all, and thanks for watching this one. Thank you very much. May God bless you. Bye-bye.